Good morning, dear children, and welcome to English class, dear children. Dear children, today we are going to learn about the topic that is jumbled words, and two topics we will study today, children, and make words with CL, DR, CH, and SL. So, dear children, are you able to see some drawings teacher had made for you? Yes, and the name of this small pictures you know very well. Is it, children? So, children, first of all, rather moving towards the exercise, we will study about what are jumbled words. Jumbled words we mean, children, the words which are not in a proper order, which are not in a proper sequence, they are jumbled. And if the words are jumbled, so we have to arrange them in proper order so that the word, whatever it will form, it should be meaningful. है ना? Like suppose I have this pen in my hand. So I have this pen in my hand. But if I will write E, P and N. So E, P, N is any meaningful word? No, children. So jumbled words are the words which are jumbled. मतलब उसके जो letters लिखे रहते हैं वो उल्टे सीधे लिखे रहते हैं, चिल्ड्रन. और फिर हमको वो वर्ड्स को अरेंज करना पड़ता है. वो लेटर्स को करेक्टली अरेंज करने के बाद जो भी वर्ड फॉर्म होगा वो मीनिंगफुल वर्ड फॉर्म होगा. मतलब वो वर्ड का कोई करेक्ट मीनिंग रहेगा. तभी हम उसको बोलते हैं जम्बल्ड वर्ड्स. जम्बल्ड वर्ड्स मतलब ऐसे वर्ड्स जो उल्टे सीधे लगे रहेंगे, लेकिन हमें उनका ऐसा वर्ड फॉर्मेशन करना है जिससे कोई करेक्ट स्पेलिंग बनेगी और वो करेक्ट स्पेलिंग का एक प्रॉपर मीनिंग भी रहेगा. समझ में आया, चिल्ड्रन? नाउ चिल्ड्रन, नेक्स्ट टॉपिक इज मेक वर्ड्स विथ CL, DR. CL से हमको कोई ऐसा वर्ड स्टार्ट करना है जो स्टार्टिंग में CL रहना चाहिए. जैसे क्लाउड, CL क्लीन, CL क्लॉक. सो ऐसे वर्ड्स जो स्टार्ट किससे होते हैं? CL. क्लॉक, देन क्लीन, देन क्लाउड, देन क्लाउन. क्लाउन मतलब जोकर. क्लर्क. ओके. DR मतलब ड्रम. ओके, DR ड्रम होता है. DRUNK ड्रंक. DRIVE ड्राइव. मतलब ऐसे वर्ड्स जो DR से स्टार्ट होते हैं, चिल्ड्रन. CH, द वर्ड स्टार्ट विथ CH. चेयर, chalk. These are the words which start with CH. There are so many words, children. Chair, chalk, then CH we can say chair, chalk. So many words are there, children. Then SL sleep, slow. The fan is slow. तो ऐसे वर्ड्स, चिल्ड्रन, जो स्टार्टिंग CL से होते हैं, जो स्टार्ट DR से होते हैं, जो स्टार्ट CH से होते हैं और जो स्टार्ट SL से होते हैं, ये वाले वर्ड्स भी हमको आज पढ़ना है, चिल्ड्रन. फर्स्ट ऑफ ऑल, नाउ वी विल सॉल्व द pictures what ma'am had given. I think so. Do you know who is this? Which is this animal, children? It is cat. But the jumbled word it is given as TAC. So the correct spelling of cat will be CAT. It is cat. Are you able to see what it is, children? You are using for writing every day in your notebook. So what it is, children? It is pencil. So the jumbled word it is given. See, it is not given the correct spelling, but the words are given for this figure. So you will write the correct spelling of pencil. PENCIL. Next, children, where you live, what is called, children? जहाँ पे आप रहते हो उसको हम क्या बोलते हैं? House. So the correct spelling is not given. The words are jumbled. So we write HOUSE. House. Now the next is, children, ball. It is a ball. You are playing every day with ball. Is it, children? Yes. So the correct spelling of ball is, children, BALL. Ball.
Next, what it is, children? You eat every day. Once an apple keeps the doctor away. You eat every day this one. So it is apple. So what is the correct spelling of apple, children? A-P-P-L-E, apple. What it is, children? Which lives in water. Some children have their home at their home fish aquarium also. So it is fish. So what is the correct spelling of fish, children? F-I-S-H, fish. Now, what is this, children? Who gives us light every day in the morning? It is sun. So you will write S-U-N, sun. Now, what is this, children? Which you eat every day in the every time in summer vacations, children? What it is? It is mango. So what is the correct spelling of mango, children? M-A-N-G-O, mango. Now, this is all about, children, jumble words. Now we will solve the worksheet which is based on jumble words. So we will start solving the worksheet. Is it, children? Yes. Now, see, children, this is the worksheet. Here you will write the section. Section is B, children. And what is the name? That is, suppose I will write my name. Bhavya Balwani. Okay. Now, arrange, question number 1, A. Arrange the jumbled letters in correct order to make meaningful words. ये देखो words पूरे जम्बल है, लेकिन आपको क्या करना है, इनको करेक्ट ऑर्डर में लगाना है. किस लिए करेक्ट ऑर्डर में लगाना है, चिल्ड्रन? अभी मैम ने बताया था कि उससे किसी भी वर्ड का मीनिंगफुल वर्ड बने. मीनिंगफुल वर्ड बने मतलब वो वर्ड का प्रॉपर मीनिंग रहना चाहिए. अगर मैं एप्पल का स्पेलिंग P-P-L-E-A लिखूंगी तो चलेगा क्या, चिल्ड्रन? नहीं, हमें एप्पल का स्पेलिंग A-P-P-L-E ही लिखना है. नाउ चिल्ड्रन, it is given here T-A-C. T-A-C is nothing but cat. So you will write cat, C-A-T, cat.